Today's video is all about how I scored band 8 in my IELTS without any coaching, and believe me, you can do it too. The first thing, where and how one should get started. तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है. For example, I knew that I had to get more than 8 band in my IELTS, and I did it. I scored 8 bands in my IELTS. And I will also provide the band descriptor in the description box below so that you can see that what is required if you want to achieve a particular band score. So there are like 4 categories for 9, 8. और जब मैंने start किया था, I started actually practicing with a book which is the official Cambridge guide. Now coming on to the main examination, it's really important to know how it all works. So it's divided into 4 sections: listening, reading, speaking, writing. I will briefly tell you about all those sections and मैंने कैसे इन चारों sections के लिए IELTS की तैयारी करी. And if you're still here, please don't forget to subscribe to my channel and like this video. So the first section, which is the listening, वो 30 minutes का होता है and इसमें 4 parts होते हैं. The main catch is the audio is only played once. तो आपको बहुत attentively पूरा audio सुनना है क्योंकि वो repeat नहीं होगा. And if you want to prepare very well for listening, the advice that I can give you is do a lot of practice, like a lot. मुझे याद है जब मैंने अपना start किया था तो मेरा पहला टेस्ट बहुत ख़राब था, but at the end of my whole journey I was doing really good. And second thing that I would advise you, that stay calm in the examination, क्योंकि होता क्या है कि अगर ऑडियो एक बार चलता है तो अगर आपका पहला वाला आंसर मिस हो गया और आप पैनिक कर गए कि ओ मेरा पहला वाला आंसर मिस हो गया, एंड देन यू आर नॉट अटेंटिव, देन यू विल मिस अ लॉट ऑफ द आंसर्स. सो यू हैव टू बी पेशेंट, काम. और अगर आपका एक आंसर गलत भी होता है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि ओके नाउ आई शुड मूव ऑन टू द सेकंड वन. नेक्स्ट सेक्शन इज द रीडिंग, और ये 1 आवर का होता है और इसमें 3 पैसेजेस आपको सॉल्व करने होते हैं. सो इसका बेस्ट तरीका इज टू डू स्किमिंग. यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ स्किमिंग. वन बोनस थिंग दैट यू हैव इन द रीडिंग सेक्शन इज the answers are in sequence. So for example कि पहला आंसर आपको अगर सेकेंड पैराग्राफ में मिला तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर उसके बाद ही होगा. You don't have to go in the paragraph everywhere randomly. You always know that when you find the first answer, the second answer is right after it. And जब आप स्किम करते हैं तो आप कीवर्ड्स मार्क कर सकते हैं, और आई वुड एडवाइस कि क्वेश्चंस पहले रीड कर लो तो आपको पता हो कि आपको पैसेज में क्या चीज़ें देखनी है, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा. उसके अलावा अगर आपको कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा है, आई वुड एडवाइस यू कि ब्लैंक स्पेसेस ना छोड़ें, आंसर समथिंग, क्योंकि एनीवेज आपको 0 ग्रेड मिलने वाला है, 0 मार्क मिलने वाला है अगर आप वो ब्लैंक छोड़ते हैं. Third part is the writing one. It is the most difficult one. I was struggling with it a lot. And also आप लास्ट तक रुकिए क्योंकि लास्ट में मैं अपने सारे रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है उन रिसोर्सेज के बिना मैं बिल्कुल भी 8 बैंड्स नहीं ला पाती. सो वेट टिल द एंड एंड मैं आपके साथ अपने सारे बुक्स, मटेरियल्स, रिसोर्सेज शेयर करूंगी. बट कमिंग बैक टू द राइटिंग पार्ट, writing is also for 1 hour and you're given 2 tasks. One is like a graph, chart, table, and one is like argument topic. In both of them you should remember that they are not easy because you should have different grammatical structures. आपका sentence structure different होना चाहिए हर line में. You should be able to show कि मैं अलग अलग कनेक्टर्स यूज कर सकता हूँ, अलग अलग एडवर्ब्स यूज कर सकता हूँ. You should know a lot of words, a lot of rephrasing is required in these essays. It's not much about the knowledge, but it's about how you're able to use your English in writing. तो मैंने क्या किया था, जो resources मैं use कर रही थी, I always used to read a lot of essays on different topics, और topics भी easy नहीं होते हैं, तो I would advise you to get familiar with all the topics. And then I used to read a lot of essays and understand the structure कि वो कैसे हैं, क्योंकि अगर आप essays किसी resources से देखेंगे भी तो उनका structure एक जैसा है. So you can try to understand what I really need to implement in my writing style. अगर मैं graph वाले task की बात करूँ, which is the task 1, there also you don't need to show that oh I have mathematics knowledge, my maths is amazing. It's about
rephrasing, because the patterns are similar. It's increasing, decreasing. You should know a lot of synonyms for words because you cannot repeat one word, and that's why it's a little difficult. But as I advised you कि आप बहुत सारे ऐसे पढ़िए, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, पूरा पैसेज स्ट्रक्चर देखिए कि मुझे किस पैराग्राफ में क्या करना चाहिए, एंड यू गुड टू गो. वर्ड लिमिट इज रियली इम्पॉर्टेंट. तो आप वर्ड लिमिट ज़रूर देखिए कि टास्क 1 और टास्क 2 की वर्ड लिमिट क्या है, और आई वुड एडवाइस कि एग्जैक्टली उतना ही लिखिए, उससे कम मत लिखिए, उससे ज़्यादा मत लिखिए. The last one is speaking, and it is also divided into 3 parts. One is like personal questions कि आप क्या करते हैं, आपकी hobbies क्या है, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं. So there are like multiple questions that the interviewer asks you. The second one is one particular topic that is given to you, and you have to speak for 2 minutes straight on that topic. And I think it holds the maximum amount of marks. And the third one is related to the number 2 task, and there are more questions related to the topic that you were given. तो लिसनिंग की तैयारी मैंने एक्चुअली अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ करी थी. सो आई वॉज यूजली सिटिंग विद हर, एंड वो मेरे से क्वेश्चंस पूछती थी और मैं हमेशा आंसर्स करती थी. मेरे लिए डिफ़िकल्ट चीज़ ये थी दैट फॉर द सेकेंड पार्ट द टॉपिक्स आर रियली वेरिड. लाइक समटाइम्स दे गिव यू सिचुएशन जो मुझे या तो याद नहीं है या मेरे दिमाग में नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल, tell us about a time when you were embarrassed. And initially when I started practicing it, nothing came to my mind. And I was like, how am I going to do it? And the practice is important. You getting familiar with all the topics that might come in the examination is extremely important. और इस सेक्शन के लिए मेरे पास आप सब के लिए एक बोनस टिप है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी. तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा. उसके बाद स्पीकिंग में प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई वुड से एक स्ट्रक्चर, अ फ्लो व्हेन यू टॉक इज़ ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप कोई भी सेंटेंस कभी भी नहीं बोल सकते हैं, एंड दिस यू हैव टू लर्न, दिस यू हैव टू वर्क ऑन. तो ये सब प्रैक्टिस से आता है. और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने अपनी IELTS की तैयारी कितने दिन तक की थी, तो आई वॉज ऑन इट फॉर 1 month and I was on it really good. Like I was working hard for the IELTS examination because मेरा target भी काफ़ी high था. This was the whole sections and how I prepared individually for all the sections. But now the most important thing is resources, books and materials. So अगर मैं books materials की बात करूँ तो IELTS Liz website is like a heaven for IELTS preparation students. The tutor Liz herself is so good. She explains everything in detail. The website is absolutely free and there's so much of material on there. You can find essays for your writing. तो आप उसे read कर सकते हैं, समझ सकते हैं और कि कैसे आपको करना चाहिए. रीडिंग की एक्सरसाइजेस वहाँ पे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, सैम्पल्स हैं. देयर इज एवरीथिंग ऑन दैट वेबसाइट. सेकेंड थिंग जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वाज IELTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. और एज फार एज आई रिमेंबर 2 बुकलेट्स मुझे IELTS की तरफ से मिली थी because I registered for the examination, but I downloaded a lot of them. I think from IELTS 1 I downloaded them and it's free on the internet. You can easily find them with the audio. तो वो ज़रूर करें. आई थिंक उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है क्योंकि मैं हमेशा टाइम लेकर प्रैक्टिस करती थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी प्रैक्टिस पेपर लेने से. उसके अलावा यूट्यूब वीडियोस, देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस ऑन द इंटरनेट जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस वन पर्टिकुलर यूट्यूबर असद याकूब एंड he really helped me with the reading section. Finally, there are some bonus tips. अगर आप लास्ट तक रुके तो मेरे पास कुछ bonus tips हैं आपके लिए. तो पहली, स्पीकिंग के लिए आपको क्या हेल्प कर सकता है? There is a feature in the Google Docs where you can speak and it writes it on the blank page and then it marks the grammatical mistakes. So it's so easy for you to know where you are lagging or where you have mistakes in your grammar. तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है कि अगर आप किसी के सामने भी बोल रहे हैं तो हो सकता है कि
वो directly आपकी गलती नहीं पकड़ पा रहे हैं, but if you will speak and then it shows you what grammatical mistakes you actually had, it's such an amazing hack. Second tool, Grammarly. I think ये एक अच्छा वो है जब आप write करते हैं या फिर speaking में अगर आप Google Docs से transfer कर रहे हैं, you can also recheck it once through Grammarly. एंड ये टिप ट्रिक नहीं है, बट मैंने कंप्यूटर बेस्ड आईएलटीएस दिया था और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माय राइटिंग सेक्शन एंड द टाइम जस्ट स्टार्टेड एंड आई न्यू कि राइटिंग के लिए मुझे हमेशा टाइम कम पड़ता था. तो आई वाज ऑलरेडी पैनिक बिकॉज आई वाज लाइक आई हैव टू स्टार्ट वेरी अर्ली एंड राइट इट वेरी फास्ट. And initially for 1-2 minutes I was blank because all I could hear was keyboard clicks from other people. And 2 minutes I couldn't concentrate क्योंकि वो आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, टक 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 टक. Then but I realized I put all my willpower. I became really patient, calm, and I was like I have to do it. And then I started like and then I didn't care about it. But this can be one of the things that you should keep in your mind before giving the exam. At least I faced it. So that was it for my whole IELTS preparation in a nutshell, I would say. But I hope it helped you, and see you next time. Bye.